Hello everyone. Today we shall study how to check a given set of number to be a group under condition. In this question is here, does set of integer is a group under operation? So this is the given operation. We have to show that integers is a group under this operation. So, in this for showing it to be a group, we have to verify the four axioms: uh, closer associative identity as well as axiom. Number one is closer axiom. For every let element A B belong to this set of integers. Here Z is the set of integers and A, B, C, E and A inverse are its elements. In the closure property, let this A B belong to this element A and B belong to set Z. Then according to this operation, this A plus B plus 1 also belong to integers, which implies that if this belong to integer, left hand side also belong to integers. Means A cross B also belong to integers. It means Z satisfies the closure axiom. Z means set of integers. Satisfies the closure axiom. Number one. Number two, axiom is associative. In associative axiom, for every A, B, C belong to set Z. In this, the element A, B, C belong to set Z. Then A star, A star, B star, C must be equal to A star, B star, C. So A star, B star, C. This will be equal to A. अब इसमें हमने क्या करना है कि जब ये स्टार को रिमूव करना है तो जहां पर हमने जो हमारे पास कांस्टेंट प्लस इसका साइन जो है प्लस है माइनस है उसको हमने जहां पर रिप्लेस करना है. दिस इज द चेंज इन दिस ऑपरेशनल मेथड है. तो ए के आगे है स्टार, तो स्टार को हमने रिमूव किया तो ये आएगा प्लस वन. ए is this star is replaced by a plus this one. अगर जहां पर 5 है तो ये आएगा a plus 5. अगर जहां पर 1/2 है a plus 1/2 प्लस b स्टार c. जैसे a स्टार b है तो b स्टार भी जाएगा b plus c plus 1. तो इट इज इक्वल टू b plus c plus 1. तो सिंप्लीफाई के बाद ये बन रहा है a प्लस बी प्लस सी प्लस 2 में दिया है a प्लस बी प्लस 1 प्लस स्टार सी. तो c मीन्स प्लस सी प्लस 1. यहाँ पर प्लस 1 है ऑपरेशन में तो c मतलब जे स्टार रिमूव करने के बाद
हमने एक तो आ गया सी प्लस ये कांस्टेंट नंबर लिखना होता है इसमें। तो ये सिंप्लीफाई के बाद हमारे पास बन रहा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस टू। वो दोनों की value is equal. A star B star C is this much, and A star B of star C is also have the same value. It means set Z is associative under star, जब with respect to star. ठीक. Number three is the identity element. Existence of identity element. So यहाँ पर आएगा for every A belong to Z. This element A belong to Z. There exists element E which also belong to Z. Here the element E also belong to Z, such that A star E is equal to A. This is the condition of identity element. अब हमारे पास ऐसे है A star B is equal to this much. ऐसे ही A star E की वैल्यू इसमें जो आएगी और इसी फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो कैसे? A star B is this much, A star E is equal to A प्लस, अब B की प्लेस पे आएगा E, A प्लस E प्लस वन is equal to A. This A and A both cancels. हमारे पास आ गया E प्लस वन is equal to 0, which implies E is equal to -1. E is equal to -1 is the identity element in Z. Identity element. Number 4 property is inverse axiom. In this, let this A belong to set Z. This A belong to set Z. Then there exists A inverse also belong to Z, such that A star A inverse is equal to identity element E is equal to A inverse star A. This is the condition of inverse axiom. Now A star A inverse is equal to A आ गया। अब जैसे ये है A स्टार B है तो A प्लस B प्लस वन है, A स्टार A इनवर्स है तो ये आएगा A प्लस A inverse plus 1, and this should be equal to identity element, and identity is -1, which implies that A inverse is equal to -2 minus A. A inverse is equal to -2 minus A exists. ठीक, अब हमने इसकी ये कंडीशन वेरीफाई करनी है। A star into A inverse is equal to E. E means -1 है। तो ये आएगा A star A inverse is equal to A plus A inverse plus 1, and this should be equal to identity element E -1, which implies that A plus A inverse, its value is -2
2 minus a plus 1 is equal to minus 1, which implies a and a cancels, minus 2 plus 1 तो जाएगा minus 1. तो this is equal to minus 1 is equal to minus 1. It means this property a into a inverse is equal to minus 1 and which is equal to e. Also a inverse star a, also a inverse star a, its value will be equal to a inverse according to this condition plus a plus 1 is equal to e. So e is minus 1, which is equal to a inverse. अब a inverse की जो वैल्यू है तो ये आएगा -2 minus a plus this a plus 1 and plus a and minus a cancel and which is to minus 1 and minus 1 is equal to 2. So hence a star a inverse is equal to e is equal to a inverse star a satisfies inverse axiom. ठीक. So when these four axioms are satisfied, it means given set of integer z is a group. Thus z set of integers is a group, is a group. Once again, लिखा है does set of integer is a group under operation this. This operation is given in the question. Say Z is a set having the elements A, B, C, E as well as A inverse. The first axiom is closure. Let this A B element A B belong to set Z. Then according to this condition A plus B plus 1 must be belong to set Z. It means A star B also an element of set Z. Means A star B also belong to set Z. Z satisfies the closure. Second is associating. For every A, B, C, these are the three elements of set Z. Then A star of B star C must be equal to A star B of star C. तो जहां पर हमने लिया है A स्टार ऑफ B स्टार C. अब इसमें जो नई बात है कि इस गिवन कंडीशन में जब आपने जो कांस्टेंट नंबर है इसको मतलब जहां से स्टार को रिमूव करना है तो इसमें आपने ये साइन प्लस है तो प्लस लिखना है, माइनस है तो माइनस, आगे जो नंबर है वो ऐड करना है. तो कैसे? जैसे कि आ गया A स्टार B स्टार C, तो यहां से हमने स्टार को रिमूव किया है तो ये आ गया A प्लस 1 मीन्स ये आ गया प्लस 1. ठीक, तो ये नंबर इस A में ऐड करना है. बाकी B स्टार C है तो इसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस ऑपरेशन A स्टार B इक्वल टू A प्लस B प्लस 1, ऐसे ही B स्टार C
आएगा बी प्लस सी प्लस वन। ठीक, सिंप्लीफाई के बाद हमारी ये वैल्यू आ रही है। ऐसे ही सेकंड, ए स्टार बी ऑफ स्टार सी। ए स्टार बी की वैल्यू तो गिवन है, ए प्लस बी प्लस वन स्टार सी। अब क्या, जब स्टार को रिमूव करना है तो एक तो आप लिखेंगे सी प्लस जे वाला कांस्टेंट नंबर इसमें ऐड भी करना हो, याद रखना इसको। तो सिंप्लीफाई के बाद इसकी वैल्यू कितनी, और दोनों की वैल्यू इक्वल है, इट मींस z इज एसोसिएटिव अंडर स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, show that set of rational numbers form an abelian group under operation a star b is equal to ab upon 2. So solution, first of all, this closure property given a star b is equal to ab upon 2. Let ab be the two elements of set Q, which implies that ab upon 2 also belongs to set Q. Therefore, a star b also an element of set. Closure property is satisfied. Closure property is satisfied. एक आ गया। दूसरा, एक्स में इसमें एसोसिएटिव एल्सियम और प्रॉपर्टी। In associative axiom, let this A, B, C, let element A, B, and C belongs to set of a rational Q. Then A star B star C must be equal to A star of B star C. Therefore, A star B star C, this will be equal to, अब इसमें देखिए A star B is A B upon 2, तो दिया जाएगा ए बी अपॉन 2। अब ये स्टार को हमने रिमूव करना है, तो इसमें क्या लिखना है, जो कांस्टेंट है दैट इज 1/2 ऑफ सी मल्टीप्लाइड बाई 1/2 ऑफ सी। तो ये बनेगा ए बी अपॉन 1/2 ऑफ सी, ए बी सी अपॉन 4। ठीक, आल्सो A star of B star C, this will be equal to A। अब स्टार को हमने रिमूव किया तो ये आएगा अपॉन 2 इंटू बी स्टार सी। जैसे हमारे पास ए स्टार बी है, ए बी अपॉन 2, तो ये आएगा बी सी अपॉन 2। तो फाइनल जो बन रहा है ए बी सी अपॉन 4। इट मीन्स these two are also equal. So it means associative property is satisfied. Property is satisfied. Here, next property is identity element. Existence of identity element. तो इसमें क्या, let element A belong to set Q, then there exists element E also belong to the same set, such that A star E must be equal to A. Means the identity element does not change the position of the given
number, and which implies that ए, अब हमने स्टार को रिमूव करना है, जैसे ये है ए स्टार बी ए बी पॉइंट टू, ऐसे ही ए स्टार ई इज ए ई पॉइंट टू इज इक्वल टू ए, तो दिस ए एंड ए कैंसल्स, तो ई इज इक्वल टू 2, e is equal to 2 is the identity element, therefore e is equal to 2 is the identity element, is the identity element in सेट क्यों, ठीक। अब इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट में ये आता है कि ए स्टार ई मस्ट बी इक्वल टू ए एंड दिस शुड बी इक्वल टू ई स्टार ए, इसको हम वेरीफाई करेंगे ए स्टार ई according to this condition, that is a e upon 2, what e is equal to, value of e is equal to 2, and this is a into e of the 2 upon 2, 2 and 2 cancel, this is into a, it means a star e is equal to a, condition first is satisfied। अब this second है e star a is equal to, ये आएगा e a according to this condition e upon 2, but e is equal to 2, ये आएगा 2 into a upon 2, 2 and 2 cancels, again e, means value of e star a is a, value of a star is also a, it means e is equal to 2, e is equal to 2 is the identity element, is the identity element in a set of rational numbers, ठीक। सेकंड आगे है फोर्थ प्रॉपर्टीज की, इनवर्स एक्सिस, रेजिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इसमें आएगा लेट ए बिलोंग टू सेट क्यू, then there exists a inverse, another element also belong to the same set, such that a star a inverse is equal to identity element e, that is equal to a inverse into a। अब इसमें हमने वेरीफाई करना है वेदर इट्स वैल्यू इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट ई, और ई की वैल्यू है हमारे पास दिस इज 2, तो ये आएगा देयरफॉर ए स्टार ए इनवर्स अपॉन 2 and its value is equal to e and e is equal to 2, so it means a inverse is equal to 2 to the 4 4 upon a, तो फाइनल ये बना a inverse is equal to 4 upon a, it means in inverse exists in Q. Now we have to verify whether A star A inverse is equal to E, then A star A inverse is equal to, तो ये आएगा A according to this given condition A star B A B upon 2, ऐसे ही A into A inverse is equal to A into A inverse upon 2। अब हमने क्या करना है, A इनवर्स की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है, A इंटू 4 upon A
upon 2. A and A cancel 2, the 2 are 4. It is 2 and which is equal to E. It means E inverse is equal to 2 and this is equal to E. Its value is E. Inverse axiom is satisfied. Inverse axiom is satisfied. Number fifth is commutative axiom. Commutative axiom. Let A B belong to Q, which implies that A star B is equal to AB upon 2 and which is equal to BA upon 2 and which is equal to B star A. Therefore, A star B is equal to B star A. Thus, commutative axiom is also satisfied. Commutative axiom is also satisfied. Hence, Q is an abelian group. When these five axioms, closure, associative, identity, inverse as well as commutative, when these five axioms are satisfied, it means Q is an abelian group. Check once again. Question is show that set of rational number Q is an abelian group under the operation this. ये हमें operation दी हुई है. So abelian means we have to satisfy its five properties: closure, associative, identity, inverse as well as commutative property. First of all, our closure property, let AB belong to this element, AB belong to this set Q. Then right side of this equation, AB upon 2 also belong to Q. When this right side belong to Q, it means left side also equal to Q. It means A star B is also belong to Q. Thus, closure property is satisfied. Number one. Number two, associative axiom. Let ABC, this ABC are the elements of set Q. Then, according to this associative axiom, A star B of star C must be equal to A star of B star C. Therefore, A star B of star C is equal to A star B की वैल्यू है ए बी पॉइंट टू. अब जे वाला स्टार हमने रिमूव करना है तो इसमें क्या है सी तो आएगा ही और सी के साथ जे वाला जो कांस्टेंट नंबर है चाहे वो जे फ्रैक्शन में हो एडिशन में हो सब्ट्रैक्शन में हो वही साइन हमने इधर लगाना है. तो यहाँ पर ये क्या है मल्टीप्लाई का जी साइन है तो जी आएगा मल्टीप्लाइड 1/2 दिस 1/2 ऑफ सी. सिंप्लीफाई के बाद हमारे पास ABC 4 आ गया. ऐसे ही A स्टार ऑफ B स्टार C. अब जब इस स्टार को हमने रिमूव करना है तो हमारे पास ये क्या आएगा A/2 अकॉर्डिंग टू दिस गिवन कंडीशन. A/2 तो B स्टार C इज इक्वल टू BC/2. सिंप्लीफाई से जो बन रहा है ABC/4. Next is our identity element. Let A belong to this rational number. Then element E also an element of Q such that तो J इसकी कंडीशन आती है
आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए ए स्टार ई मस्ट बी इक्वल टू ई मीन्स ई शुड नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ नंबर ए here a star is according to this condition this is equal to a e upon 2 मतलब जैसे ये कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ही हमने इसको ए स्टार ई को चेंज करना है ठीक एंड इट वेरीज क्वेश्चन टू क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन में ऑपरेशन गिवन है वैसे ही हमने इसको चेंज करना है तो जी आ गया ए ई पॉइंट टू इजकल टू ए एंड ए कैंसल्स तो e इजकल टू 2 इट मींस e इजकल टू 2 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट of this in rational number q then inverse let this element a belong to q then there exists a inverse another element of the same set such that a star a inverse is equal to identity element e और जो इसमें इनवर्स प्रॉपर्टी का कंडीशन है अब इसको हमने वेरीफाई करना है वेदर दिस ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ई आर नॉट ठीक ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स अपॉन 2 अकॉर्डिंग टू दिस गिवन condition and value of a inverse is equal to 2 a inverse is equal to ये by cross multiply 2 2 या 4 upon a so this a inverse is equal to 4 upon a it means inverse exists in set q अब इसके बाद इसकी दोनों कंडीशंस को भी वेरीफाई करना है तो कौन सी whether a star a inverse is equal to e and this is equal to a inverse star e पहला जी आ गया a star e is equal to a star e is equal to according to this condition a star e is equal to a e upon 2 and a और e की वैल्यू है हमारे पास 2 यहाँ पर हमने e की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है तो जी आ गया a इंटू 2.2 2 and 2 cancel is equal to a it means a star e is equal to a second e star a e a upon 2 तो e is equal to 2 2 and 2 cancel and it again a means e star a is equal to a star e is also equal to inverse LCM is satisfied ठीक then one more fifth commutative axiom let a b belong to set q then a star b की क्या वैल्यू according to this given condition a b upon 2 and a b is equal to b a and this is equal to b star a so it means a star b is equal to b star a commutative axiom is satisfied hence when these four properties are satisfied hence q is an abelian group thanks